हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे और हमने स्ट्रिंग को डिटेल में पढ़ा और स्ट्रिंग के सारे प्रोग्राम्स देखे, है ना। अब हम वो नेक्स्ट हमारा डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी हमने बेसिक्स स्टार्टिंग में देखा हुआ था जब मैंने सारे डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताया था। दैट इज योर लिस्ट। इस वीडियो में हम लिस्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में लेते हैं, किस तरीके से हम लिस्ट के फंक्शंस को यूज करते हैं, किस तरीके से हम मल्टीपल वेज है कि हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, हम क्या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लिस्ट पर लगा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने लूपिंग कंस्ट्रक्ट को यूज कर सकते हैं एज वेल एज वन प्रोग्राम्स। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी विल सी इन दिस वीडियो, है ना। सो लेट बी स्टार्ट। जैसे कि हमें पता है कि लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है और इसके स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि लिस्ट की खासियत क्या होती है। लिस्ट इट्स अ काइंड ऑफ म्यूटेबल डेटा टाइप, है ना। और हम इसमें क्या करते हैं, इंसर्शन ऑर्डर जो होता है हमारा वो प्रिजर्व होता है, मतलब जो हम इंसर्ट कर रहे होते हैं जिस ऑर्डर में वो उसी ऑर्डर में होता है। हमने देखा था कि लिस्ट और एरे में डिफरेंस क्या है। द बेसिकली लिस्ट आल्सो कैन कंटेन द हेट्रोजीनियस डेटा, है ना, इंस्टीड ऑफ द होमोजीनियस ओनली, है ना। और आप इसमें से डिलीट भी कर सकते हैं डेटा को इसमें ऐड भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द रीजन हमने इसको क्या बोला है, आपका म्यूटेबल बोला है ना। इवन योर लिस्ट कंटेन the different data also, different data types data. For example, it can contain the dictionary, it can contain the list itself, it can contain the float real, all these things, है ना. That is what the reason it's a heterogeneous in nature. And so if the insertion order is preserved, we know this, the slicing and indexing can be applied, है ना. List also contain the duplicate data. So these all were the discussion in the previous video. Now we start that how we can create the list in the multiple ways, है ना. So सबसे पहला तरीका क्या है लिस्ट का, जो हमने बेसिक देखा हुआ है कि if we want one list, तो मुझे क्या करना है, suppose L is equal to this. So when you put the square brackets here, this is the basic way by which you have the list. So when you check the type of this data type and run this code, can you see this, the output is the list finally. Suppose another way, what can be the another way to have a list? Suppose the user is giving the input as a list. So it means that we are having another way to have a list is by using dynamic input. What is dynamic input? सपोज यदि यूजर से मैं एक इवेल को यूज कर इसमें एक इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूं, दैट इनपुट इज सपोज एंटर द लिस्ट. ओके, सो व्हेन आई रन दिस कोड अगेन एंड प्रिंट द टाइप ऑफ दिस list, I should not write the list, but in Python you can do this, it will not give you error. But right now we are trying to avoid it. When we will be discussing the object oriented programming, at that time we will be discussing over all these things, है ना. So when you run this code, और यदि इसमें मैं पास करता हूँ 1 2 3, so can you see this, this is the list, and when I check for the type also, when I run this code and give 1 2 3, so can you see the type is list. So this was the another way to take the input as a, I will say, to create the list. Third possible way is by using list function. Is this? So suppose I want to create one list here, and suppose I want to have a data in particular range, है ना. सपोज मैं बोलता हूँ कि मुझे एक रेंज जो है, इस रेंज में मुझे 1 से लेकर 50 की रेंज में 2 के सेपरेशन पर एक डेटा चाहिए. अब रेंज का मैंने आप लोगों को जब रेंज डेटा टाइप के बारे में बात करी थी ना, तो इट वाज नॉट गिविंग द कंटेनर टाइप, है ना. इट वाज जस्ट स्टोरिंग द डेटा एट द मेमोरी प्लेस. देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द पर्टिकुलर advanced data type, then you can use it, है ना. So that is what the reason कि we are using this range data type with the list data type to get the exact output. So this is what the another way to have you the list, है ना. तो हमने कितने तरीके देखे अभी. एक नॉर्मल तरीके से, एक हमने eval का यूज करा जब हम यूजर से इनपुट ले पा रहे हैं लिस्ट का, फिर हमने क्या करा, लिस्ट फंक्शन का यूज करके हमने देखा कि हम इसको लिस्ट के फॉर्म में ले पा रहे हैं. Another possible way, why I'm discussing these ways, because
in a kind of hacker platform, sometimes in a competitive programming, you will be finding to create the list to apply your logic, है ना? तो one another way that you are passing something as a string, and suppose I will say by using the split function. So everything the by default, suppose I am having this string that hello Rahul, how are you? When I do the split here, s dot split, and that is based on simply a space, and when I print the type of this L and this code, so can you see this is the list? So this was another way, because by default the input we all know that it is containing the in the form of string only. So if you want to convert this data in a particular type, it is better to have a split of this data and take individual value in the list, or you can say in the form of the tuple, then you can deal with that. So this is what the way to have a list in another way, like you're taking the input and you are performing the split over that and getting the list as an output. फाइन। अब जब मैंने आपसे बात बोला कि भाई जब हमारा जो ऑर्डर है इंसर्शन का ऑर्डर लिस्ट के लिए वो प्रिजर्व्ड है ना? प्रिजर्व का मतलब वी वेरी वेल नो दैट वी कैन अप्लाई द स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रिंग में पढ़े हैं। द सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? सपोज मैं यही कोड लेता हूं, इसमें लिस्ट हमने दिखाई हुई है, सपोज एल। What do you mean by the indexing? Suppose I want to get this 0th element in the variable x. This x, so you are having the output as a 1. What does it mean? By using the indexing, that the particular index that is 0, we could be able to print the value of x. अब हम क्या चाहते हैं? ये जो हमने डेटा इंडेक्स के थ्रू निकाला है, सेम डेटा को मैं एक साथ लेना चाहता हूं by using the slicing. So for example, I'm taking the same code here. मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं 0 से लेके मुझे 20 तक का जितना भी डेटा है आप दीजिए, that should be incremented by 2, मतलब position should be incremented by 2. So can you see this like 1, because we have started this list by using the 1. तो आप देख सकते हैं 1 इंडेक्स आपका जो नेक्स्ट है वो 2 से जंप करके जा रहा है, तो here is the 5 7, so you can see the 5 9 13 17, है ना? So in the similar way that when you apply indexing over the string, in a similar way you will be applying the indexing over the list. Now we check that once you are having this list, so how to traverse and utilize this list? Until unless we are not able to traverse the list, how we will be using the particular element of this list, है ना? तो हम कितने तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज द लूप्स, है ना? तो बेस्ट पॉसिबल सजेशन इज हियर दैट सपोज आई एम टेकिंग दिस वन, तो हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को जो है हम इंडेक्सिंग के थ्रू है, उसके प्लेस पर हमारे पास जस्ट लाइक फॉर ईच लूप ऑफ जावा हमारे पास फॉर लूप ही अवेलेबल है पाइथन में। तो मैं यदि इस लिस्ट को ट्रैवर्स करना चाहता हूं, तो वेरी सिंपल टू मी, आई विल बी यूजिंग द फॉर xi in L, and when I print this x, you will be getting the output like this. Fine. So this is what the way to traverse the list. Okay. Suppose you do same thing like you want to do with the help of in terms of the index also, है ना? So what you need to do? Just simply you will be writing for I in range of. Range of what? Range of, है ना? So what you need to do? Just you will be taking the length of L here. What you need to do? Just you will be indexing. Just you will be taking the print. That is another possible way to do the same thing by using the indexing, है ना? यहाँ पर मैंने उसकी कंटेनर रिलेशनशिप का यूज करा है कि भाई कोई एलिमेंट उसके कंटेनर में है और उसको हम एक्सेस करके
काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या करा है कि हम इंडिविजुअल इंडेक्स को सर्च कर रहे हैं और उस इंडेक्स के डेटा को हम उस इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, है ना? Now let me discuss. So these are the basic things that you need to do in a detail about the list. Let me move further. अब हम कुछ जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में बात की है, इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हमारे पास हैं लिस्ट के, हम उनके बारे में बात करते हैं ना। सो वी स्टार्ट विद सम फंक्शन, है ना। तो लेट द इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो सबसे पहले इस तरीके से हमने लेंथ फंक्शन देखा है, तो लेंथ फंक्शन हमारे लिए वैसे ही एप्लीकेबल है जैसे हमने अदर कंटेनर डेटा टाइप्स पर देखा है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे लिस्ट लेता हूँ, सिमिलर लिस्ट इज हियर एंड व्हेन आई अप्लाई अ लेंथ हियर प्रिंट of this L, you can see the output is 25 because the increment is by 2. Then suppose you want to count the frequency of particular element by using the direct function of the list. What does it mean? Suppose I want to count the one. How many time? Just a minute. It should be the count, not count. So you can see it's having the frequency one. Instead of this, suppose I'm writing one list here, and it is containing one 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 one, and I want to print the count here. So you can see the 6 time ones are there, and so you are having the frequency. Another important function, that is the index. What do you mean by this? I'm taking the same list here, and with the help of index I want to access the data, है ना। तो ये क्या क्या रिटर्न करने वाला है अपने को इंडेक्स फंक्शन यहाँ पर, सॉरी, दिस इंडेक्स फंक्शन विल रिटर्न यू द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट occurrence of your specified item. What does that mean exactly? So if I write the index वन, सपोज मैं वन का इंडेक्स जानना चाहता हूँ, तो जो फर्स्ट occurrence है इसकी वन की, वो 0th पोजीशन पर है, तो इसने आपको रिटर्न कर दिया, है ना। Some important functions, and when you will be exploring more about the function, there are a lot of functions available in the Python. But in this video, what I'm trying to give you, just I want to introduce the with the functions, how to use the function with the list. So you will be able to understand by using the Google and other platforms that how to use the functions with the list, है ना। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करते हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है लिस्ट में, एंड वी आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द लिस्ट हियर, है ना। सो सपोज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट अबाउट विच वी आर टॉकिंग, दैट इज द अपेंड फंक्शन। में हमने देखा भी है, हमने कुछ प्रोग्राम्स भी बनाए हैं उसमें अपेंड फंक्शन के बारे में। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस अपेंड फंक्शन, है ना। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, दिस इज व्हाट द लिस्ट आई हैव, and I know very well this list is actually the mutable list. So when I do the L dot append, and when I do here, suppose I want to pass Rahul, when I print L, the 111 and the Rahul. So this append function, what it do basically, it basically insert the Rahul at the last of the list data. तो ये इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व करके चलेगा और कहीं ना कहीं उसमें लिस्ट को हमारे उस लिस्ट में एट द लास्ट आपको राहुल को ऐड कर देगा, है ना। इसका इसकी एप्लीकेशन हमने देखी हुई थी अपेंड की, अभी लास्ट कुछ प्रोग्राम्स भी बनाए थे और उसमें अपेंड को हमने यूज करा हुआ है ना। नेक्स्ट वी आर हैविंग द इंसर्ट फंक्शन। What is the use of this insert function? If I want to add something in the list at the specified location, what does it mean? I want to insert, for example, a Rahul
Rahul. I want to insert this Rahul is a particular position. So suppose the position is 0 here. So when I print this L, can you see the output has been inserted at the 0th position? है ना? So what is the difference between the append and the insert? By using the insert, we are inserting data at the particular position, and by using the append, we are inserting data, but by default it is added at the last. Next very important function, that is the extend function. What is the use of extend function? Suppose you are having two lists, that is L1, which is containing, suppose Rahul, just a minute, it should be list A Vasu. Okay. Another list, that is L2, it is containing, suppose 1, 2, 3, 4. Okay. And what I want to do in the list L1, I want to add the data of list L2. So what I will do, just simply I will be using the extend function. So when I print L1 here, can you see this? Rahul Dubey, Vasu and 1, 2, 3, 4 is added here. So what is the difference? By using the append, we are adding the particular item inside the list. By using the insert, we are inserting our data at the particular place. By extend function, we are trying to extend the list by using the another list. Now one more important function is here, that is pop function. Okay. So by using the pop function, you can have the feeling of the stack, है ना? जिस तरीके से आप स्टैक के साथ डील करते हैं, उसी तरीके से आप यदि पॉप फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो लिस्ट है, सपोज L2 इज इक्वल टू 1 2 3 4, and when I do L2 print L2 dot pop, when I run this code, can you see the last item has been taken out? But suppose at the same time I want to print the particular index, suppose that is the second index, so I will be able to print the 3. यदि हम पॉप फंक्शन का यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट में आपके पास लिस्ट से पॉप होकर जो एलिमेंट आ रहा है वो लास्ट एलिमेंट था, बट वी कैन यूज द इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स टू गेट द आउटपुट ऑफ द डेटा फ्रॉम this list also by using the pop function. There are some more important function that is related to the particularly ordering of your list, है ना? So suppose मैं अपनी लिस्ट की डेटा को रिवर्स करना चाहता हूँ, है ना? तो मैं सेम लिस्ट लेता हूँ, सपोज दैट इज द L2 लिस्ट, मैं इसको L से रीनेम करता हूँ, है ना? इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। मैंने इस L लिस्ट को लिया एंड व्हेन आई डू L डॉट रिवर्स, व्हेन आई प्रिंट L अगेन, should be print not, when I print it again, so can you see this, the 1 2 3 4 has been reversed to the 4 3 2 1. So this is what the way just to reverse the list. Another important thing is the short. So how to short the list? Suppose I am taking this code. Simply suppose this is the 1 and 3 and this is your 5, and I want to short this list. When I run this code, can you see this is 1 3 4 5 5 5. So by default, it is giving you the output in the form of the increasing order. Fine. So short function is having the default nature in the increasing order. What we need to do if we want to do the thing in a decreasing order, है ना? So here we have to write the reverse is equal to true.
When you run this code, can you see this is the 5431? Fine. So you can you can sort your list by using the sort function in the increasing order as well as in the decreasing order. There is one more very important concept about the list. That is, we have to differentiate the two words, that is the aliasing and cloning. So what is the difference between the aliasing and the cloning? Aliasing stands for, suppose I'm having this object x is equal to 1, 2, 3, 4, 5. And what I'm trying to do, just I'm writing y is equal to x. When I print y here, so the output, can you see this is the same? But we are assuming this, we are trying to assign this x to the y. What exactly what we are doing? इसमें पाइथन में जब हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ था तो देयर वर वन इम्पॉर्टेंट कोड फ्रॉम माय साइड, इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, है ना। तो यदि ये लिस्ट ऑब्जेक्ट है तो ये जो x है वो क्या होगा, आपका रेफरेंस वेरिएबल है ना। और रेफरेंस वेरिएबल है, इसका मतलब मैं y में x को असाइन कर रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट आई एम ट्रांसफरिंग द रेफरेंस। सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट exactly I am saying correct? So we have to prove it by using the code, that is the print id of x, and you can print the id of y. When you run this code, can you see the same memory location for both the I, x and y? So this is not the copy of list, it's a basically aliasing for the same memory location, है ना। तो हम केवल reference transfer कर रहे हैं। But now the question comes, how to do the copy of or clone, how to create the clone of the list, है ना। So there are two ways to have the clone of list. Like suppose we are having the same list here, that is x is equal to 1, 2, 3, 4, 5, and I want y is equal to, I want everything of the x inside the y, है ना। And when I take this code here, I run this code, a minute, x should be here. When you run this code, can you see this? When we are passing the data of x, it is containing the same data, y is containing the same data, but can you see this data has been copied and cloned to the y. It is not referenced by the y for the same memory location. The new object has been created and assigned to the y. That is what the reason we are having the two different memory location. But in this situation, we are having the same memory location, just we were transferring the references. तो y को x का reference दे दिया, तो basically this concept is aliasing. But the second one is the cloning, है ना। So by using the slice operator, you can do the cloning of your list. What can be the another way? There is one more way to have the same thing. I am taking this code here. Instead of this slice operator, you can have also the one important function of your list, that is copy. So when you run this code, can you see a different object is there, and can you see the different locations of the memory? So this is what the clone of list. So we have to very clearly understand that what is the difference between the aliasing and the cloning of the list. Aliasing means we are giving a reference, another reference to the same object. Cloning means we are creating another object and assigning the reference to that. Now, for this list, we will talk some important operators. That is very much important. So we are having two operators with list. So one is your plus operator and second one is the multiple operator. So suppose we are having these two lists, suppose L1 and L2. So this is your L1 and L2. So when we write L1 is equal to L1 plus L2, what does it mean? And when you print L here, you can see the Rahul Dubey Vasu 1, 2, 3, 4. Can you see the extended concept here? So by using the plus operator, we have done the list extension. Now come to the asterisk, or that is your multiplication operator. So what is the importance of this? It is very much important to have a repetition of your data. I am taking the same list here.
suppose L2 is equal to 1 2 3 4, and when I do L is equal to L2, that is multiplied by 3. When I print L in front of you, so can you see the output? The 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 and 1 2 3 4 has been repeated 3 times. So it gives you the repetition of whole list. And you have seen the membership operator with the list also, है ना? So if I write 1 in L2, and when you run this code, so you are having the true option because 1 is in the L2. So you can use the membership also with list. Now we are having the list of list. Another important concept is here the list of. Very much important to understand the multi-dimensional list because when you will learn the numpy for the data analytics purpose, for the data science purpose, you must be aware about how you can use the multi-dimensional list and what are the importance of the numpy over the list. Then you will be understanding. So suppose I am having one list is that is 1 2 3, and we are having another list that is 1 uh, 3 4 5, and we are having another list that is a 4 5 6. So what I have done, I have taken the list of list of list. So suppose I want to access a particular element that is 6. So where is this 6 is? This 6 is inside this first list, not inside the second list, no. It's inside the third list. So there's a third level of the list nesting. There you will be able to find the list 6. तो अब देखिए कैसे देखेंगे हम उसको कि हमारी पहला जो था 1 2 3 4th पोजीशन पर हमारी नेक्स्ट लिस्ट है. सो व्हेन आई राइट लाइक L4, when you run this code, sorry, it should be 3 because list index start with the 0. So can you see that is a 1 3 4 5 4 5 6, but our objective is to access this 6 only. So in this list 1 0 1 2 third and fourth position you can see it means 3 should be here. When I run this code, so I am able to access this 4 5 6, but what is my objective? To access the 6 here only. So 0 1 2 second position. So that is what the multi-dimensional list, this is what the list of list and how to access this list of list. It is very important to understand for the data analytics purpose. Then we have one more concept, that is we have discussed about the list comprehension. What do you mean by list comprehension? हमने देखा था बहुत क्लियरली, हमने समझा था कि किस तरीके से हम लिस्ट को बनाते हैं कॉम्प्रीहेंड करके, मतलब हम लॉजिक देखकर उसमें. सपोज आई वांट टू हैव अ स्क्वायर ऑफ डेटा अंडर वन रेंज. तो व्हाट आई विल डू, सिंपली आई विल हैव दिस लिस्ट, आई विल बी टेकिंग द स्क्वायर ऑफ दैट डेटा. We can define for a particular range. Suppose that range is 10. So when I print this as, you can see you are having the squares of number under the range of 10. So this is what the way, by using the logic we can put the data inside the list. So that we call the list comprehension. So it was all about the list, that what was the important functions, what was the list comprehension type of activity, what was the multi-list options here, how to use the mathematical operators with the list. All these things we have very clearly covered in this video. Now let me have one program. Let me have one program that will be dealing with the list only, and as well as this is very important programs and asked at the most of the places, है ना? So suppose you have to write one program required to have one program here, write a program to display the unique vowels present in the given word. अब जब vowels वाली बात आ रही है and you have given word, है ना, तो हम किस तरीके से करेंगे? हम पहले नंबर एक vowels की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है.
तो हमारे पास वॉबल्स कितने होते हैं? ए, taking the particular lowercase order right now. I, that is O. Find out the unique vowels present in the given word. So to find out the unique vowels present in the given word, we have to take the word as an input from the user. So suppose I am taking this input, the user enter the word, then what I need to do to found a number of unique vowels present in the word. So how I will check? I will take the individual letter that is present in the word. For letter in word, what I need to do, I will check, is this letter present in the vowels? So I will check if letter in vowels, जो लेटर मेरा इस वर्ड में है, क्या वो लेटर वॉवेल्स में भी है? बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज द वर्ड यूनिक वॉवेल्स. यदि मैं इस लेटर को वॉवेल्स में चेक करके फाउंड में अपेंड कर दूंगा, तो जो बार बार हमारा वॉवेल्स आ रहा होगा वो बार बार ऐड हो जाएगा. तो यूनिक के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? थर्ड लेवल पर यहाँ पर, इफ लेटर नॉट इन, अभी हमने इन चेक करा है, इन फाउंड, फाइन. सो दीज थ्री लेवल्स वी कुड बी एबल टू चेक, क्या लेटर वर्ड में है, क्या लेटर वॉवेल्स में है. इफ दोनों कंडीशंस आर ट्रू, बट वन कंडीशन आल्सो बी देयर, दैट इट शुड नॉट बी इन द फाउंड. सो व्हाट आई विल डू, सिंपली by using the list concept that we have learned, the found dot append. Append is a very important function for any kind of activity. So you will be adding the letter. Finally, what you need to do, just print fine. Okay, so when I run this code, and suppose I am writing here Rahul Dubey, cannot give the space right now. So when you run this code, so can you see here the A, E and O, these are three vowels which is uniquely present in the given word or in the given string. Okay, so this is what the use of that we could be able to find out the vowels inside the given word by using the list only. So I hope this is all about the list data structure and how to use your list, how to use your functions, use your operators. Okay, so it's all from my side for this video. Thank you.